दूसरा प्रोटोकॉल जो कि आरएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए यूज़ किया जा सकता है, दैट कंटेन्स द formaldehyde in place of glyoxal as RNA denaturing agent. For the reason of some drawbacks of the use of glyoxal in the gel electrophoresis. So steps are the similar which we have talked earlier. The first step would be denaturation of the RNA sample. RNA sample can be denatured by formamide, and then electrophoresis is done using agarose in the presence of formaldehyde. अगर फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में थोड़ा सा देखें कि इसकी केमिकल नेचर क्या है, दिस इज़ हाईली टॉक्सिक. इट इज़ अ पोटेंशियल टेराटोजन और carcinogenic molecule or chemical that should be avoided. It is toxic when inhaled or when it comes in contact with the skin. Therefore, whenever we have to deal with the formaldehyde, it should be done in chemical fume hood, because iski smell jo hai, that is not good. It, if inhaled, can be toxic. So fume hood is the best place to deal such chemicals. Agarose gels that contains the formaldehyde, they have some preferences over the other types of gels used for RNA electrophoresis. These gels are slimmer. These are less elastic, more fungible than non-denaturing gels, and we have to take a lot of care when handling these gels from one place to the other place. That means from the electrophoretic container to the blotting setup, because they can easily break down. Formaldehyde containing agarose gels, they remain the popular for those people who are working with the northern blotting, and the reason behind that was the separation of formaldehyde or dissociation of formaldehyde from RNA was easy and quicker after electrophoresis as compared to glyoxal. So these gels containing the formaldehyde, they got popularity over the previously used gels containing the glyoxal as denaturing agents. अगर हम ओरिजिनल प्रोटोकॉल की बात करें, ओरिजिनल प्रोटोकॉल में जो फॉर्मेल्डिहाइड की हायर कंसनट्रेशंस बहुत कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूज़ किया जाता था. फॉर एग्जांपल 6% ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड वाज यूज्ड और 2.2 मोलर कंसनट्रेशन वाज यूज्ड इन द ओरिजिनल प्रोटोकॉल. और इसके पीछे रीज़न क्या थी कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस जो जेल है उसमें से formaldehyde जो है that gets diffused or that goes into the electrophoresis buffer. Ultimately जेल में जो concentration है formaldehyde की वो decrease हो जाती थी. This problem is resolved by avoiding the running gels for by running the gels for shorter period of time at higher voltage, but keeping in mind that higher voltage can cause smearing. So we have to be very careful not to increase the voltage too much. The best voltage could be 7 to 10 volts per centimeter as compared to normally use 2 to 3 volts per centimeter. So this increase is going to cause change in the formaldehyde concentration in the gel 1.1% or 0.66 molar. Staining के लिए we use the ethidium bromide. Ethidium bromide हमारे पास दो options है. Either we can use it in the gel during the casting, or we can add them into the RNA samples. Ethidium bromide was thought to interfere with the subsequent steps of shifting or transfer of RNA to the nylon membrane. But later on, when it was observed during number of the steps of transferring RNA from the gel to the solid sport, कि ethidium bromide का interference का concept is not so much, is not, the magnitude is not so high कि हम ये कहें कि ethidium bromide को हम यूज़ ना करें. बेटर स्टेनिंग के लिए दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि आरएनए सैंपल में एथिडियम ब्रोमाइड को शामिल कर दें और उसको हीट करें बिफोर डूइंग दी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इससे एक तो स्टेनिंग बेहतर होगी और उसके बाद जेल में इंटरफेरेंस
जो एज्यूम की गई एथिडियम ब्रोमाइड की दैट इट इंटरफेयर्स इन द ट्रांसफ़र विल नॉट बी देयर। उसके बाद एक और चीज़ हमें सामने रखनी पड़ेगी कि एथिडियम ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन मैटर करती है बहुत ज़्यादा। अगर एथिडियम ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन 50 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर ऑफ द सैंपल इससे ज़्यादा नहीं है तो इंटरफेरेंस इन द ट्रांसफ़र फ्रॉम द जेल टू द सॉलिड स्पोर्ट is almost negligible. So we can use the ethidium bromide either in the sample or in the gel.